Hi, I'm Jiya Shankar. Subscribe to Siddharth Kannan's YouTube channel now. आपने मराठी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री मारी, दिस वाज लाइक अ डेब्यू फिल्म, राइट? Yeah. उस वक्त दिल से तुम्हें लगा कि ये इतना बड़ा ब्लॉकबस्टर हो जाएगा? ऑनेस्टली नो, मैंने ये नहीं सोचा था कि जितना ऐसे जिस तरीके से अभी हुआ है वो होगा, बट आई डेफिनेटली थॉट कि ऑफ कोर्स इट्स रितेश सर्स मूवी, प्लस जिनीलिया का भी डेब्यू फिल्म है, तो ऑफ कोर्स लाइक सबको वो एक्साइटमेंट है, लोग उन्हें दादा वहीनी बुलाते हैं इंडस्ट्री में, लाइक अदरवाइज ऑल्सो people call them dada vaini, so much love they have for this couple, we all have for this couple. तो of course वो excitement तो थी, and somewhere I had this hope कि this movie will do well. But अभी जिस तरीके से condition like situation चल रही है कि लोग theatres में नहीं जा रहे films देखने until unless it's like very good, like दृश्यम जिस तरीके से चली, otherwise लोग नहीं जा रहे, they are waiting for OTT पे आ ही जाएगा, you know, eventually. So that was the fear कि पता नहीं अगर लोग नहीं गए तो थिएटर्स में, पहला मूवी है, so there was too much pressure, too many things that were going on in my head. But then what happened was just like a blessing. Unbelievable, है ना? Unbelievable, yeah. तो माने बहुत धन कमाया रितेश, जेनेलिया ने, टीम ने, वो धन जिया को आया कि नहीं? जिया भी नोट काउंट कर रही है कि नहीं? Genelia, I should call her now. She's the producer. Ouch. Okay, listen. तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिला कैसे? तुमने ऑडिशन किया या उन्होंने कहीं तुमको स्पॉट किया, क्या था? They actually spotted me. पैपराजी वाला स्पॉटिंग? नहीं, वो पैपराजी कल्चर में अभी तक आई नहीं हूँ मैं. But so what happened was, मैंने randomly ऐसे ही मेरे मम्मी को भेजने के लिए एक वीडियो बनाया था with my co-actor. It's in Marathi. और मेरे नाम से लोगों को पता नहीं चलता कि मैं मराठी हूँ. तो मैंने ऐसे ही रैंडमली बना दिया. वीडियो वाज वेरी फनी. आई थॉट शुड आई पोस्ट इट, एंड माय मॉम वाज लाइक पोस्ट इट, इट्स वेरी फनी. I posted it, went viral, and it reached Riteish and Genelia, and that's how they spotted me, and they were like, she's very good for Nisha, and they called me up, they narrated me the film, and I said yes, and they said yes. क्या बात है. पर ये जो आपने कहा पैपराजी स्पॉटिंग अभी तक हुआ नहीं है, ये कंप्लेन है कि आप हैप्पी हैं? I don't know, I'm happy. Like if it happens naturally, that's fine. But yeah, I don't want to fall into that trap. Like. And what is the trap? क्या है? I don't know. Like now अभी सबको पता है honestly कि मीडिया को बुलाया जाता है. I'm creating trouble for myself. नहीं, और पैपराजी हमारे भाई बहन बहुत मेहनत करते हैं, and we respect that. But उनको पेमेंट भी मिलता है. हाँ. उनको मिलता है, क्यों ना? Exactly. They work so hard. Yeah, and it is necessary for even for actors to be spotted at events, you know. But अभी तो इस तरीके से हो गया है कि मैं कॉफ़ी पीने गई तो आई एम स्पॉटेड, आई एम हियर, आई एम स्पॉटेड, आई एम हेयरकट कराने गई, आई एम स्पॉटेड. सो दैट आई फील इट्स यू आर डूइंग इट, दे आर नॉट स्पॉटिंग यू. नहीं, ऑफ कोर्स पूरी दुनिया को मालूम है ये सब. यू जेन्युइनली फील कि ऐसा एक्सपोजर करियर के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है? एंड बी वेरी कैंडिड. आई डोंट नो if it gives you any benefit out of it, until unless you are spotted at some event, जहाँ काम के लिए है. Exactly. Otherwise, if you are spotted just here, there, people are scrolling nowadays. They're just scrolling, and yeah, spotted, okay, scroll. But is there something interesting that you're doing in it? Then maybe I'll watch the video. Otherwise, okay, spotted, scroll. Until unless it's like probably Alia Bhatt, Ranbir Kapoor, even them for like now. For I think this is what is my opinion कि लोग उन्हें भी देख के अभी हाँ spotted हो गए, ठीक है, क्या करें हम देख के. It's become like that now. I feel लोग used to हो गए इस चीज़ से. नहीं, मैं आपसे 100% मानता हूँ कि 90-95% पब्लिक तो बुलाती है थ्रू देयर PR पीपल. PR लोग भी मेहनत करते हैं. हमारे PR वाले भाई भी हैं यहाँ पे, so nothing to take there. The paparazzi boys and girls work so hard, and I love them too. But the truth is, you're right कि कभी-कभार जिम से बाहर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, 4 बार दिखते हो. Gym is so much. Oh my God, gym has become another coffee shop. है ना? कि जिम से बाहर आ रहे हैं फिर.
ठीक है, बट आई टेल यू वन थिंग, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि लाइक यू सेड, अगर आप कोई ट्रेलर लॉन्च में हो जहां आप एक्टिंग कर रहे हो तो वहां पे फर्क पड़ता है. आई नो सो मेनी पीपल, आप मानोगे नहीं यार, मैं जब ये वीडियोस देखता हूँ कभी कभार मैं पूछता ये कौन है जो आया है स्पॉटिंग में, भाई बता तो दो उसका नाम, बिकॉज यू सी देम सो ऑफन बट यू डोंट नो व्हाट दे डू, बट यू डोंट नो व्हाट दे डू बट दे आर स्टिल देयर. जब तुम्हें मालूम था कि रितेश और जेनीलिया है इस फिल्म में, कहीं वो इनसिक्योरिटी आई थी कि देखो ये लोग हैं, इट्स बेस्ड ऑन देम, देयर आर स्ट्रांग कपल, शायद मैं साइडलाइन हो जाऊं, ऐसी फीलिंग कभी आई? Not at all. Not at all. Because I know my potential. I know I will stand out in whatever I do. And I think this is what everybody should have there in their heads, no matter where they are, no matter who's in front of them. Because this is what it is for me. In case like tomorrow if I'm sharing a screen space with Deepika Padukone or Ranveer Singh or anybody, I know my capability and I will shine through. I love the confidence. क्या बात है, ये अंगार वाला मोमेंट है, बोलो अंगार. अंगार. ये मेरा फेवरेट लाइन है, फायर फ्रॉम विद इन. बट ओके, 2013 जिया ने अपने करियर की शुरुआत की विद अ तेलुगु फिल्म. क्या रिसर्च किया भाई? वाह, आपकी रिसर्च टीम ने, बाय द वे. तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 10 साल हो गए, राइट? जिया, यू आर लाइक 10 years, 1 decade in the business. Yes. Let's do a flashback, and I love these flashback moments. Good times, bad times. क्या रही 10 साल में? A lot of learnings. I've learned a lot. I've groomed myself a lot. If you see me in my first film, I look very different. Now what I look very different. In fact, ये अभी वेड मूवी जो की है उसमें मैं बहुत अलग दिख रही हूँ. It's only been a year to that film, to its release now. Last January में we shot and December we released. Still I look very different. And I've only kept on looking better and better because I've groomed myself, I've washed myself, I've changed few things, I've worked on myself, and that's how things are going for me. So I do not regret anything that I've done in my past, be it television, mostly I've done television. So how people look down upon television, I do not see it that way. I've learned a lot through television and I've improved myself as an actor. तो मेरे लिए बहुत चीज़ें अलग रही है. Of course hardships बहुत रहे हैं. जैसे कि? It's not easy. Even if it's television, like how people look at it, कि अरे television ये survive करके दिखाओ. It's not easy. Even if तुम्हारा कोई एक शो बहुत बड़ा हिट हो गया, yeah, people know you. But is the channel going to take you in some other show again? That is another question. क्योंकि अब तुम बहुत ज़्यादा दिख गए हो तो शायद दोबारा रिपीट ना करें. मे बी कूल ऑफ पीरियड में चले जाओ. सो एनीथिंग कैन हैपन. You don't know how people think, how channel people function, how productions function, or what they like for a character. You never know. So the struggle for an actor never ends. यानी आप कह रहे हो कि हिट हुआ सीरियल, रेटिंग्स भी आई, पर लोग बोलेंगे अच्छा आपका फेस जो है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर से एसोसिएटेड है, सो हम इमीडिएटली आपको यहाँ नहीं डाल सकते, राइट? इनफैक्ट बिगिनिंग ऑफ द कॉन्वर्सेशन में आपने मुझसे एक लाइन कहा था कि पहले मैं इतना अच्छा नहीं दिखती थी, फिर मैंने अपने आप को ग्रूम किया, विच इज़ ग्रेट. यानी आप अपने आप को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम असेस कर रही थी, व्हाट इज गोइंग राइट, व्हाट इज रॉन्ग. जब आपको लगा कि आप ठीक नहीं दिख रही हैं, वो ठीक वाला डेफिनेशन हर इंसान के लिए अलग होता है, राइट? There's no definition for looking right, looking wrong, whatever. How did you figure out कि you're not looking right? क्या आपको जज किया, किसी ने आपसे कुछ बोला जिससे ये realization आया? In fact, people were the most supportive of me. I was my biggest critic. When I started working and when I was properly working, तभी मैं खुद ही अपने आप को देख के बोलती थी और बेटर हो सकता है, और बेटर हो सकता है. सो आई वॉज नेवर सेटिस्फाइड विद वॉट आई वॉज डूइंग. आई ऑलवेज फेल्ट दैट और बेटर हो सकता है. आई कुड लुक बेटर, आई कुड लुक द सर्टन वे, बिकॉज आई जस्ट कुड सी समथिंग दैट वॉज मिसिंग. आई वॉज नेवर लाइक दैट्स गुड. तो वो अभी भी लाइक इफ आई डू द फिल्म नाउ, आई थिंक आई विल बी सो मच बेटर than what I did in the film, but I still like it was good.
नहीं ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस के साथ भी आता है ना, व्हाट इज गोइंग Yeah, राइट, yeah, व्हाट इज yeah. गोइंग रॉन्ग। Yeah. कभी कोई रिग्रेट था कि कोई गॉडफादर नहीं था जो शायद आपको थोड़ा एडवाइस या थोड़ी पहचान और करवा देते? That is true. A helping hand would have been easier for me in this journey. But then I don't regret anything. जिस दिन मैं I will reach that peak where I am successful, I will be able to help other people in a way, or I will be able to motivate other people, I will be able to inspire other people, and I will try my level best whoever I could help. क्योंकि मेरे लिए कोई नहीं था, I would want, I know that feeling. I know that feeling how it feels कि तुम्हारे लिए कोई नहीं है, so you have to learn through your own mistakes. And at least I will share my experiences with people so that वो गलतियाँ ना करे जो मैंने की. तुमने कौन सी गलतियाँ की? Like going down south starting में ही. I don't know if that was a mistake or but I just feel like I should have waited. Like now I want to go to south. Now is the time. You are prepared हो? Yeah, I'm prepared. Because south is a very big industry. You know, you would want to enter when you are like prepared. It is like Bollywood now. The films that they are doing. Baba, forget Bollywood. South They've reached films, Hollywood. Hollywood. Yeah. You know, South films are unbelievable. Yeah. In fact, I feel It's crazy, regional yeah. cinema. Look at you. Yeah. Marathi film, it's regional cinema which is going to another level. Yeah. तो वो एक था, और क्या कठिनाइयाँ देखी आपने? I could just like share my experience, you know, like don't look down upon television. If you get an opportunity, go for it. You'll just learn something. It can't happen that you've not learned anything out of it. Even when I did Anupam Kher's acting institute, so I did part-time. I only wanted to gain some confidence because I was a very shy kid. इतनी shy कि लोग अगर मुझे नाम भी आके पूछते थे ना ऐसे में Yeah, I was that. मतलब मैं मम्मी को बोलती थी कि आपको गुस्सा नहीं आता था, मैं रहते तो नाम बता करती. तो yeah, I was very shy. तो I am still, but yeah. क्या हुआ वहाँ पे अनुपम खेर अकेडमी में? So a lot of people, I don't know what they were expecting. By the end of it, when we asked them like, कैसा था for you? How was the experience? And they were like, okay. I don't know what were you expecting क्या अनुपम खेर तुमको सीधा यहाँ से launch करने वाला किसी film में? What were you expecting? I got what was needed from an acting institute, and I was confident enough to face cameras. I was confident enough to go for auditions, and it was a blessing that we were very lucky that Anupam Kher himself could give us a few lectures even though we were part-time. So I learned a lot, and I still remember his lessons, and I keep it with me. Like I know it. कभी ऐसे हुआ है because you started so young. Yeah. You've obviously had your mama जो खुद अपना काम कर रही हैं. कभी loneliness हुआ? I'm an only child. So for me, I've always been alone. बचपन से ही. Both of my parents used to go to work. Then my mom and dad separated. So after that, I used to be home alone. Like my mom used to go to work. I used to do everything on my own. बचपन से लेके अब तक. तो obviously I always felt that I should have had a sibling. But ठीक है, अब मॉम डैड ने नहीं पैदा किया एक और मेरे पास तो क्या है. बहुत अच्छा पॉइंट आपने मुझसे कहा जो मैंने आपसे इंटरव्यू से पहले भी कहा. I was interviewing a few people, or they've raised this big debate which is now going viral and people are talking about it, saying that TV, right? जो TV actresses है या actors है जब फिल्मों में आते हैं, some of them feel talking about their television career is not great. Sometimes even I and a few close friends of mine also say this कि हम लोग को मैसेज आता है कि यार अब वो फिल्म में आ चुकी है तो उसके टीवी करियर के बारे में सवाल मत पूछना. ये भी हो जाता है. फिर साथ में you know एक बार मूवी स्टार बन जाते हैं, फिर उनको लगता है टीवी के बारे में मत बोलो. ये लुकिंग डाउन ऑन टीवी आपने कहाँ देखा हुआ है और क्या हुआ है आपके साथ? A lot of times, this is actually very true, and I have seen all these people, but I will never shy away from talking about it. I don't know, मतलब इतना क्या problem है TV से? Yeah, this is how
people, a larger amount of audience love watching TV. अगर उन्हें पसंद है and you are working for this audience, these people, then what is your problem? अगर ये audience की पसंद है तो वो है. You do your job and I am just doing my job, whatever my audience would demand, and I will do that. Obviously it comes down to a point whether I am happy doing it, and I was honestly happy doing it. I have done shows which are very different. All the characters that I've done are very different from each other. I played Haryanvi girl, I played Gujarati, I played Marathi, I played Nepali watchman in this one show. So all these characters were there in that show. But I just tested myself as an actor, and I feel very good about it. तो वो सास बहू होता है टेलीविजन में, बस वो निकाल दो भाई, अब नहीं होता वैसा. Not every single show is like that. There are very different shows and they're amazing. If you, for example, like Anupama is #1, in television, and look at the amount of people who are crazy for that show. It is amazing. और film stars आ रहे हैं अपनी films को promote करने television में. Why? Because these are the people who are going to like, अच्छा ये आए हैं, क्यों आए हैं, then they will know probably कि अच्छा इनकी film आ रही है. So it's like that, like imagine the amount of people who are watching television. नहीं, पर एक और ये भी होता है, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि टीवी फैक्ट्री जैसा है, and scripts last minute में आते हैं, ज़्यादा preparation नहीं होता, on the spot scripts change करते हैं. Yeah. Obviously it's a debate. Yeah. But some of them also say कि you know what, that makes us stronger. क्योंकि ऐसे situations अगर हम संभाल सकते हैं तो हम कोई भी situation संभाल सकते हैं. Exactly. It is, yeah, that is 100% true. There are difficulties, like we don't have time. We do not have time for anything in television. Like ऐसी script आती है, गर्मा गर्म लो, पढ़ो, करो. But that's the challenge. And once you start having fun with it, that's when you will test yourself as an actor. You will know अगर तुम ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. And imagine after this doing a film, that'll be like a piece of cake.